होइछन्ती अमेरिकार व्हाइट हाउस रे कैपिटल हिल्स रे वर्तमान शपथ ग्रहण समारोह आरंभ हो सारी शपथ कराइबे अमेरिकार प्रधान विचारपति सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति तांकु शपथ पाठ कराइबे अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भाव में ट्रंप शपथ नेबाकु जाउछन्ती ट्रंप 2.0 आरंभ हेबाकु जाउछि तमाम पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तांको सहित ट्रंप एवं वर्तमान जे उपराष्ट्रपति जे वांस एवं ट्रंप टीम रो अन्य जो माने रहछन्ती समस्त उपस्थित अछन्ती कैपिटल हिल. That is how for nearly 250 years our great American experiment grounded in the rule of law has endured. So, as we inaugurate a new president and vice president, let us remember that the power of those in this room comes from the people. The construction workers who build our country, the teachers and healthcare workers who nurture us, the troops defending our freedoms, and yes, the firefighters in Los Angeles putting themselves on the line for us. Our democracy's strength and grit must match theirs. May God bless our nation. Thank you. Good afternoon. Endurance through the years is the ultimate test. To persevere through time is the truest measure of an idea, an institution, and a nation. Our founders wrote the Constitution so that America could withstand all the twists and turns of time. They wrote it to guide us and to preserve forever our right of life, liberty, and the pursuit of happiness. But as much as the truths and principles enshrined in our Constitution remain the same, our democracy promises the American people the power to change, to chart their own destiny. That's the beauty. That is the importance of democracy. It allows the endurance, the permanence of a nation through change. It allows nations like our United States both to avoid the obstacles and to seize the opportunities God has placed before us, all while staying true to our founding principles. Today is our country's 60th inauguration ceremony. Like all the others before it, it is a celebration of our right to set our uniquely American course. The past several years have been trying at times for many, many Americans, and also for the nations of the free world that we humbly strive to lead. In November, Americans chose again to steer this nation towards greatness, the secure, safe, and prosperous future that our founders envisioned for all of us. And today, we celebrate not only their decision to do so, but also the simple right and wisdom of a free people to make their own choice so that their nation might endure. And now, allow me to welcome Archbishop Timothy Dolan and Reverend Franklin Graham, who will deliver our invocation. Please rise. Be still and know that I am God, supreme among the nations, supreme on the earth. Let us pray. Remembering
General George Washington on his knees at Valley Forge, recalling Abraham Lincoln at his second inaugural, with malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right. Remembering General George Patton's instructions to his soldiers as they began the Battle of the Bulge 8 decades ago: pray, pray when fighting, pray alone, pray with others, pray by night, pray by day. Observing the birthday of the Reverend Martin Luther King, who warned, without God, our efforts turn to ashes. We, blessed citizens of this one nation under God, humbled by our claim that in God we trust, gather indeed this inauguration day to pray for our President Donald J. Trump, his family, वर्तमान his ये भव्य advisors, कार्यक्रम his आरंभ हो cabinet, सारी his कैपिटल हिल aspirations, his आउ vice अल्प समय भितर president. ट्रम्प शपथ नेबे For the वर्तमान Lord's blessings संविधान upon जो Joseph Biden, अंश रही ताकू for our men and पाठ women in कराଯାଉଛି uniform, वाशिंगटन डीसी रे for each ये other भव्य whose शपथ hopes are समारोह stoked अनुष्ठित होଉଛି this new आउ year, अल्प this समय जहाँ inauguration पूर्व day. कहा जाइथिला कि 10:30 समय रे Here and भारतीय relying समय upon that 10:30 रे prayer from the Bible. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार नुआ राष्ट्रपति भाव शपथ नेबे द्वितीय थर पर अमेरिकार राष्ट्रपति भाव शपथ ने डोनाल्ड ट्रम्प एवं 47तम राष्ट्रपति भाव शपथ नेबे डोनाल्ड ट्रम्प प्रधान विचारपति पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइबे। एक बृहत गणतंत्र हिसाब रे अमेरिकार बेस परिचय रही गणतंत्र तेणु से आधार गत वर्ष जो निर्वाचन होता आश्चर्यजनक भाव एवं समस्त को पछरे पकाई डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थे अमेरिकार क्षमता को फेरी लोकंर भरोसा जितबार सक्षम होती। डोनाल्ड ट्रम्प द्वितीय थर पर राष्ट्रपति हेबार सौभाग्य अर्जन करिसेंती एवं विश्वर सबुठारु शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति भाव दायित्व नेबे। आ अल्प समय भितर डोनाल्ड ट्रम्पर शपथ कार्यक्रम बा शपथ ग्रहण आरंभ हो। ये पूरा समारोह आरंभ हो सारी पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति समस्ते उपस्थित अच्छा समारोह सहित वर्तमान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं उपराष्ट्रपति जेडी वांस उपस्थित अच्छा। विदायी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित पाखरे छिड़ा होती। कमला हारिस वर्तमान चलित थर राष्ट्रपति प्रार्थी रही से पूर्व उपराष्ट्रपति रही कमला हारिस एवं सहित अन्य पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति माने उपस्थित अच्छा। बाराक ओबामा रही। तेबे ए भव्य समारोह रे डोनाल्ड ट्रम्प को सहित पाखरे छिड़ा होती उपराष्ट्रपति जेडी वांस एवं डोनाल्ड ट्रम्प को टीम रो अन्य सदस्य माने जोठी एलन मस्क रही देखा मिलुछि। तो वर्तमान समय ये समारोह आरंभ हो सारी अमेरिका विश्वर शक्तिशाली राष्ट्र भाव वर्तमान नुआ करी पुणी थे द्वितीय थर पर राष्ट्रपति भाव में चयन होगा विजय हासिल करने एबे शपथ ने मात्र किछि समय अपेक्षा विश्वर सबुठारु शक्तिशाली देश अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबे डोनाल्ड ट्रम्प जहां सारा विश्ववासी अनाई रहिछंती। We pray for President Trump that you'll watch over, protect, guide, direct him. Give him your wisdom from your throne on high. We ask that you would bless him and that our nation would be blessed through him. We also ask that you would bless and protect Melania as First Lady. We thank you for the beauty, the warmth, and grace that she shows not only to this nation, but to the whole world. We thank you for Vice President-elect J.D. Vance and his wife Usha and their young family. May he be a strength to President Trump, to stand beside him, to hold up his arms like Aaron held up the arms of Moses in the midst of battle. The prophet Samuel reminded the people, it was you that brought them up from the land of डोनाल्ड ट्रम्प Egypt. शपथ समारोह अल्प समय भितर आरंभ हो। विनोद मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित रोचंती फोन लाइन आलोचना करबा। सुत मिश्र आपन को स्वागत। अमेरिकार
ये आश्चर्यजनक भाव में जो भली विजय होता डोनाल्ड ट्रंप करे एवं पूरा विश्ववासी नजर रही अमेरिका रे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कार्यक्रम को ये पूरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो अंश विशेष था ये कहीं एते मात्रा रे चर्चित समारोह बोली कहा जाए कौन आप कहे देखो विश्वर सबुठारु बृहत्तम इकोनॉमी एवं सबुठारु बड़ मिलिटरी पावर तेणु तार जी राष्ट्र मुख्य हेबे शपथ ग्रहण समारोह रे पूरा विश्वर इंटरेस्ट स्वाभाविक तेणु डोनाल्ड ट्रंप करेंगे सेकेंड इनिंग्स विश्व में यथेष्ट आशंका देखा दी तार गोटे प्रतिफलन आप देखिए आज जो 50,000 रु ऊर्ध्व लोक जो मैंने वाशिंगटन डीसी रे मार्च करुँचे जो इश्यू गुड़ा को हाईलाइट करुँचा एक्चुअली दैट इज द स्पीकिंग पॉइंट दैट इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट कारण बर्तमान डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टेन्योर रे एंटायर वर्ल्ड इज मोर एंग्शियस देन एक्साइटेड एंग्शियस ये डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन प्रतिश्रुति जो इलेक्शन कैंपेन देखिए इलेक्शन लड़ी जीति आसी अमेरिकन सोसाइटी की तो डीपली डिवाइड कर एंटायर वर्ल्ड को गोटे चिंतार पकई कारण एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी इज नाउ इन क्राइसिस जदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जार करेन्सी एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी रे ओनली जो सब प्रमुख जिस डोनाल्ड ट्रंप शपथ नेउ नेउ कार्य करिवो बोली कहा जाउछि से सब केउ विषय हे पारे केउ विषय उपरे शपथ नेउ नेउ कार्य आरंभ करिवे डोनाल्ड ट्रंप प्रथम कथा तो तांकर जोटा पेट प्रोजेक्ट दैट इज इलीगल इमिग्रेशन सेटा होछि बॉर्डर अमेरिका रो दीटा जो मेजर बॉर्डर वन विथ कनाडा एंड वन विथ मेक्सिको से दीटा को से ऑलरेडी स्ट्रिंजेंटली स्ट्रिक्टली क्लोज करिवे बोली जो प्रतिश्रुति दैछन्ती सेटा अमेरिका रो दीटा बॉर्डर को इमीडिएटली अफेक्ट करिवो तापर सेकंड जो से प्रॉमिस करिसन्ती जे 60% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स 25% टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स and similar tariff on other foreign goods सेटा एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी की अफेक्ट करिवो तो ई दीटा तीनटा जिंस होछि जोटा कि मेजर एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज रे जो नेगोशिएशन जो पेरिस कन्वेंशन तादर जदी होरि जिवे एंटायर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो मूवमेंट दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड नेगेटिवली तो ई तीनटा जिनिस जोटा कि एंटायर ग्लोब इज एंग्शियस अबाउट एक्साइटेड ना डॉक्टर विनोद मिश्र ये सब दिग गुड़िक कथा वर्तमान समय आलोचना करा जाउछि किंतु गोटे जो यात्रा रही डोनाल्ड ट्रंप गला थर जितेबले विदाय नेउथिले एवं जो बाइडेन जितेबले विजय हासिल कले सेतेबले जो विवाद भितर को डोनाल्ड ट्रंप आसीथिले तापरे 4 वर्षर व्यवधान रहिला 4 वर्ष भितर डोनाल्ड ट्रंप जो कार्यक्रम रहिला एवं एथर निर्वाचन में जो आधार आसिले फिर भी आपन पाखु वर्तमान ए शपथ I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. नुआ राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं सारी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वितीय थर
राष्ट्रपति भाव में विजय हासिल करने पर वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रंप एवं शपथ ग्रहण पर गार्ड ऑफ ऑनर दि जाइए जहाँ तांकर सामरिक सेना बा सामरिक संबर्धना दिया कथा ताहा मध्य दि जाइए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान शपथ नहीं सारी जो चित्र आपण माने देखुछंती अमेरिका रे शपथ ग्रहण समारोह चली अमेरिकार नुआ राष्ट्रपति भाव में डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान दायित्व नहीं द्वितीय थर पर अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में दायित्व नहीं डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न दिगों को नहीं आम आलोचना करुछंती। आम सहित डॉक्टर विनोद मिश्र रही लगातार भाव में वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कि किभली भाव में अमेरिकार डोनाल्ड ट्रंप यात्रा रही एबे जेतेबेले ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम चली आगो को अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ठारू कौन आशा रखिबो निर्वाचन में जो सब कथा डोनाल्ड ट्रंप कहते ताहा किभली भाव में पालन करेंगे एवं पूरा विश्व पाई जेहेतु अमेरिकार गोटे शक्तिशाली राष्ट्र मुख्य भाव में दायित्व नहीं तेणु तांकर आभिमुख्य तांकर परवर्ती स्टेप तांकर परवर्ती निष्पत्ति पूरा विश्व को केमती प्रभाव पकाइबो से नहीं मध्य आलोचना करा भारत सहित कौन संपर्क रहिबो आगामी समय ताकू नहीं मध्य वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ माने अनेक आकलन करुछंती। तो वर्तमान ये भव्य समारोह आप देखुं तमाम राष्ट्र मुख्य माने उपस्थित रही अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकार राष्ट्र मुख्य भाव में राष्ट्रपति भाव में वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं सारी शपथ ग्रहण उत्सव में अनेक अतिथि सामिल होती विदायी राष्ट्रपति जो बाइडेन कमला हारिस उपराष्ट्रपति एवं एथर डोनाल्ड ट्रंप जे प्रतिपक्ष रही सी उपस्थित अच्छा पूर्वतन अनेक राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्य उपराष्ट्रपति माने उपस्थित अच्छा वर्तमान ये भव्य कार्यक्रम दृश्य आप देखुं पूरा कैपिटल हिल रे किभली उत्सव मुखर होइछि एवं जनवरी 20 तारिख आज दिन को अपेक्षा थिला कारण गला वर्ष डिसेम्बर मास रे जेतेबेले फलाफल आसिला डोनाल्ड ट्रंप विजय पर अपेक्षा रहिथिला कि जनवरी 20 तारिख से समय को जेतेबेले डोनाल्ड ट्रंप शपथ नेबे अनेक कथा कहिथिले किंतु ताठू सबुठू बड़ प्रसंग थिला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पुणी थे अमेरिका को केमती आहुरी उन्नति आसी पारिबो अमेरिका को केमती ग्रेट करि पारिबे सेथिपाई जो नारा से देथिले निर्वाचन में ताहा एथर विजयर मुख्य बा मूल मंत्र बोली कहा जाउछि। डोनाल्ड ट्रंप सहित भारतर संपर्क मध्य खूब घनिष्ठ रही कारण नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गला थर जेतेबेले राष्ट्रपति थिले डोनाल्ड ट्रंप जेतेबेले भारत गस्त को आसीथिले भारत रे गुजरात रे तांको भव्य स्वागत करा जायथिला प्रधानमंत्री मोदी सहित तांकर घनिष्ठता को नहीं अनेक समय चर्चा करा जाय नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हेउ किंबा हाउडी मोदी कार्यक्रम हेउ सबु जगह प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप घनिष्ठता देखा मिले अनेक बड़ मंच रे प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप पूर्व प्रशंसा कर सारी तेणु एथर कार्यकाल भितर भारत सहित संपर्क केमिति रहिबो ताकू नहीं अनेक आलोचना वर्तमान समय करा जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी सहित जो घनिष्ठता रही ताकू आगामी समय अमेरिकार राष्ट्र मुख्य भाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केमिति आगु को बढ़ाइबे ता उपर मध्य नजर रही तेबे नुआ राष्ट्रपति भाव में अमेरिका रे शपथ नहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भव्य शपथ समारोह उत्सव एथर कैपिटल हिल भितर ही होइछि अर्थात व्हाइट हाउस भितर ये शपथ ग्रहण उत्सव होइछि या पूर्व प्रायतः अनेक शपथ ग्रहण उत्सव कैपिटल हिल बाहर व्हाइट हाउस बाहर आम देखा पाई किंतु चलित थर व्हाइट हाउस भितर ये उत्सव वर्तमान समय चली। डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित लगातार भाव में जोड़ी रही डॉक्टर मिश्र जो कथा आम आलोचना कि वर्तमान ये शपथ तो भव्य चली किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा कि डोनाल्ड ट्रंप पुणी थे अमेरिकार राष्ट्रपति होगा पर तांकर निष्पत्ति तांकर पदक्षेप पूरा विश्व पर केमती प्रभाव पकेबा जाउछि आगामी दिन रे। प्रथम कथा तो डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट कारण डोनाल्ड ट्रंप एते एडवर्सिटी भीतर देई भी से पुणी इलेक्शन जीति पारे 4 वर्ष पर फॉर दैट रीजन एज ए इंडिविजुअल इट इज ए सक्सेस स्टोरी से सैल्यूट टू है किंतु so far as his impact on global politics is concerned people are anxious more anxious than excited जदि डोनाल्ड ट्रंप कहते जे दीटा युद्ध चली चली सेटा को बंद करेंगे सेटा नहीं एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी वाज लिटिल हैप्पी किंतु तापर जो मेजर इश्यूज बर्तमान एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी की वरी करे से सबुथ किंतु डोनाल्ड ट्रंप इज मार्क्ड नेगेटिवली to begin with the global international economy रो जो धारा
से धाराटा डेफिनेटली प्रतिहत हम कारण फर्स्ट टेन्यूर रे जो डोनाल्ड ट्रंप आसीथिले सेतबेले से ट्रांस पैसिफिक जो बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक अरेंजमेंट सेटा से भांगी देथिले सेकेंडली द अदर ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ताथरू भी से अमेरिका को ओवर नहीं थिले तेणु एई भली जो तांकर जो एक्सक्लूसिविस्ट पॉलिटिक्स तांकर जो अमेरिका को नहीं गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया दैट इज नॉट इन कमेंसुरेट विथ liberal global order. Entire global leadership is now more anxious than excited. भारत सहित संपर्क केमती रहबो डॉक्टर विनोद मिश्र जेतेबेले प्रथम टेन्यूर रे डोनाल्ड ट्रंप आसीथिले जदि आपण बहुत किछ कहिले रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप्स पर्सनल बनमी थाई पारे मु से विषय बेसी अवगत नुहे केते तांकर निबिड़ता किंतु जो लास्ट टेन्यूर रे जो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया को आसीथिले कौन सी इंडिया रो ऑब्जेक्टिव से फुलफिल करनथिले रादर से इंडिया को बहुत गोटे असुविधा परिस्थिति रे पकड़ी दी जाइछन जोटर एपर्यंत भी भारतवर्ष उभरी पारेनी भारतवर्ष गोटे डेफिनेटली गोटे डेवलपिंग इकोनॉमी किंतु ताकू से डेवलप्ड इकोनॉमी रो आख्या दे जो भारतवर्ष जो कंसेशंस पाउथला इन इंटरनेशनल इकोनॉमी सब कंसेशन को बंद करदेले एवं भारतवर्ष को फोर्स कले अमेरिका ठारू वेपन किनिबा पई 20% बेसी प्राइस दे तेणु डोनाल्ड ट्रंप जदियो माइट बी ए गुड फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी किंतु इंडिया रो फ्रेंड बिली से केबे प्रूव करि पारे ना तेणु एई टेन्यूर रे से सेबळी किछि पदक्षेप नेबे जोथरे कि इंडिया विल बी बेनिफिटेड तार आशा मोर आशा बहुत कम किंतु जदि प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेशनशिप तांको सहित रही जोटि कि से डोनाल्ड ट्रंप को किसी राजी करई पारिबे कि जो हार्म से करिसेंती तांकर प्रथम टेन्यूर रे ताकू जदि से रिवर्स करि परिबे इंडियन इकोनॉमी बाय इंडियन commodities can have better access to United States market and can in international negotiation India can get concession जोटा कि आगुर पाई आसुतला सेटा जदि करि परिबे then I would say that is a diplomatic victory for Prime Minister Modi and Indian diplomats सेटा समय कहबो किंतु वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप जो मोर रिजिड से आग थर जो जी रिजिड थे जो आइडिया दौले एथरक से आहरी रिजिड तेणु इट इज नॉट गुड टाइम फॉर द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी लेट अलोन इंडिया जो आमको देखिया पे पड़ियो कारण मु थिली ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप कर 4 वर्षर पूर्व शासन काल समय मु गुड़ाए समय अमेरिका थिली सेतबेले कुआ जाउतला मु स्टेट डिपार्टमेंट रे थिली तेणु बहुत पाखर देखि डॉक्टर मिश्र आपण टिके अटकेबा चाहिए वर्तमान ट्रंप कर स्पीच आछि भाषण रखुछंती डोनाल्ड ट्रंप nation that is proud, prosperous and free. America will soon be greater, stronger and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people.
Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense, they're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people.
To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Let me use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. कोलकाता आरजीकर डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी संजय राय को आजीवन कारादंडादेश शुणाई कोलकातार सियालदा कोर्ट। आजीवन कारादंड सहित 50,000 टंकार जरिमाना देवाकू निर्देश दैछन्ति। एथिसहित यह विरलू विरलतम मामला नुहे बोली कहछन्ति कोर्ट। पीड़ितांक परिवार को 17 लाख टंकार अनुकंपा राशि देवाकू कहछन्ति कोर्ट। सेपटे अनुकंपा राशि ग्रहण करिवे नाही बोली कहछन्ति पीड़ितांकर परिवार। तल कोर्ट राय विरोध में हाइकोर्ट जीवे बोली कहले पीड़ितांकर परिवार। गत शनिवार कोर्ट संजय मामला में दोषी साब्यस्त होते पीड़ितांकर परिवार संजय राय को फांसी देवाकू दाबी करथिले। 2024 अगस्ट 9 रे हत्या होइतबा बेले 2025 जनवरी 20 तारिख में दंड विधान होइछि। 5 मासरे शुणाणी शेष करी दंडादेश शुणाइले कोलकातार सियालदा कोर्ट। संजय राय दंडादेश घोषणा पूर्व केरल कोर्ट को बड़ राय आसी। प्रेमिका को हत्या मामला रे प्रेमिका को मृत्यु दंडादेश होछि। 2022 रे प्रेमिक सारण राज को मारिथिला प्रेमिका ग्रीष्मा। संपर्क रे रहिबा को मना करिवारु प्रेमिक को हत्या करथिले ग्रीष्मा। जूस रे कीटनाशक मिसाई देथिला प्रेमिका ग्रीष्मा। कीटनाशक बोतल को लुचाइथिले ग्रीष्मांकर परिवार। घटना रे ग्रीष्मार मामू को होइछि 3। फटाफट विस्तृत और सठिक खबर पाई न्यूज 18 मोबाइल ऐप डाउनलोड करंतु। क्यूआर कोड स्कैन करी ताजा खबर सह जोड़ी होंतु। है इस देश की। कोलकाता आरजीकर डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी संजय राय को आजीवन कारादंडादेश शुणाई कोलकातार सियालदा कोर्ट। आजीवन कारादंड सहित 50,000 टंकार जरिमाना देवाकू निर्देश दैछन्ति। एथिसहित यह विरलू विरलतम मामला नुहे बोली कहछन्ति कोर्ट। पीड़ितांक परिवार को 17 लाख टंकार अनुकंपा राशि देवाकू कहछन्ति कोर्ट। सेपटे अनुकंपा राशि ग्रहण करिवे नाही बोली कहछन्ति पीड़ितांकर परिवार।
तल कोर्ट राय विरोध में हाइकोर्ट जीवे कहले पीड़िता परिवार। गत शनिवार कोर्ट संजय मामलें दोषी सब्यस्त होते पीड़िता परिवार संजय राय को फांसी देवाक दाबी करते। 2024 अगस्ट 9 रे हत्या होता बेले 2025 जनवरी 20 तारिख में दंड विधान होछि। 5 मासरे शुणाणी शेष कर दंडादेश शुणाइले कोलकातार सियालदा कोर्ट। संजय राय दंडादेश घोषणा पूर्व केरल कोर्ट को बड़ राय आसी। प्रेमिका को हत्या मामला रे प्रेमिका को मृत्यु दंडादेश होछि। 2022 रे प्रेमिक सारण राज को मारिथिला प्रेमिका ग्रीष्मा। संपर्क में रहिबा को मना करिवारु प्रेमिक को हत्या करथिले ग्रीष्मा। जूस रे कीटनाशक मिसाई देथिला प्रेमिका ग्रीष्मा। कीटनाशक बोतल को लुचाइथिले ग्रीष्मांकर परिवार। घटना रे ग्रीष्मार मामू को होइछि 3 वर्ष जेल दंडादेश। नयातिंकारा सेशंस कोर्ट शुणाई मृत्यु दंडादेश। विरलू विरलतम मामला बोली कहले कोर्ट। बरगड़ कुर्ला जंगल निखोज युवती मुर्मूष अवस्था उद्धार घटना। 3 जन को गिरफ्त। पुणी फोकस अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भाव में शपथ नेले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका रे पुणी स्वर्णिम युग आरंभ होली कहले। आज आरंभ अमेरिका रे ट्रंप सरकार 47तम व्यक्तिगत भाव में द्वितीय थर पर हेले राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण पर संविधान रे संबोधन में ट्रंप कहले कि अमेरिकार आरंभ है स्वर्णिम युग। जातीय शिक्षा नीति रे 2025-26 शिक्षा वर्ष पर नाम लेखा को नहीं आसिला विज्ञप्ति। प्रारंभिक स्कूल शिक्षा पर स्कूल ले खोलिब शिशु बाटिका। बयस 5 रु 6 वर्ष होइतबा आवश्यक। 6 वर्ष ऊर्ध्व शिशु नाम लेखाइबे प्रथम श्रेणी रे। कोहल है प्रधानमंत्री आवास योजनार योग्यता मानदंड। सर्वाधिक मासिक आय 10,000 रु 15,000 को वृद्धि। 22 लाख लोकों को सामिल करिवार लक्ष्य। 24 रु चलिबो सर्वे आउ रहिबनी बिजू पक्का घर स्कीम। कोलकाता डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी को आजीवन कारादंड। मृत्यु पर्यंत जेल दंड शुणाइले सियालदा कोर्ट। पीड़ितांकर परिवार को 17 लाख अनुकंपा राशि देवाक निर्देश। विरलतम अपराध होई नथिबारु मिलिलानी फांसी। नियंत्रण रे कणासर झाड़ाबांती स्थिति। डाक्तरखाना डिस्चार्ज हेले 27 जन। सीडीएमओ कहले दया नदी जल बारण पाई पका जायछि बारिकेड। लोकों भाड़ेनी पाइप रे आसुनी पानी पी हेउनी नलकूप जल। स्थिति परखिला न्यूज 18 टीम। And the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation.
one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. In America, the impossible is what we do best. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism.
Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, performing America the Beautiful, please welcome. तो अमेरिकार नुआ राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे डोनाल्ड ट्रम्प निज अभिभाषण में अनेक किछि कथा कहछन्ती अमेरिका को पुणी थरे महान करिया पई स्वर्णिम जुगर आरंभ होई सारिछि एवं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा दे डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे क्षमता को आसीबा परे समान कथा दोहराइछन्ती अनेक दिगो को नै डोनाल्ड ट्रम्प निजर प्रथम अभिभाषण में कहछन्ती अमेरिका सेना अन्य देशर भितरे पसिबो नाही केबे हेले भी विश्व रे युद्ध चाहे नहीं अमेरिका एवं विश्व शांति रे विश्वास करे अन्य देश रे युद्ध रे अमेरिका सेना शामिल हेबो नाही कारण युद्ध को नहीं अमेरिकार राष्ट्रपति कौन रहिबो आभिमुख्य ता उपरे समस्तकर अपेक्षा थिला तेणु ए बाबदरे मध्ये निजर प्रथम अभिभाषण रे कहछन्ती डोनाल्ड ट्रम्प से भली अमेरिका को आहुरी विकसित देश हिसाब रे बा आहुरी आगो को बढ़ेवा पाई अमेरिकार विकास पाई केमिति सरकार काम करिवो अर्थनीतिर आहुरी उन्नति पाई केमिति काम करिवे किभली विदेश रे जो बा अन्य देशरु जो सामग्री आसुछि सेथिरे जो टैरिफ बढ़ेवा पाई आगुरु चर्चा होतला से नै मध्य आज डोनाल्ड ट्रम्प निज अभिभाषण कहछन्ती समरेन्द्र बासा आम सहित जोड़ी होती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ श्रीयुत समरेन्द्र बासा आपन को स्वागत आलोचना को अमेरिका रे नुआ राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे द्वितीय थर पर राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे जो जो सबू दिग को नहीं चर्चा करा जाउथला आज ठीक सही कथा सही अभिभाषण रे सुनिबा को मिलिला आज प्रमुख विषय गुडी को कोन उठाइछन्ती डोनाल्ड ट्रम्प निज अभिभाषण भितर आपन कोन देखिले देखो तो इन हाउस सिक्योरिटी जेमति हम देखिबा नेशनल सिक्योरिटी कथा को से गुरुत्व दउछन्ती एवं जेमति से जहां जहां प्रचार बेले निर्वाचन पूर्व जहाँ से कही जनसाधारण निकट में जहाँ जहाँ मोर अभिव्यक्ति रहा जहाँ मोर प्रचार माध्यम जनसाधारण उद्देश्य अमेरिका फास्ट डेवलपमेंट कथा से कहते से कथा ही बर्तमान से शपथ पर वक्तव्य प्रथम संबोधन से कही तेणु बर्तमान जमी आम देखी फाइनेंशियल कोलैप्स होता बाइडेन जुगर जहाँ को सी बारंबार कहते अमेरिकन कांग्रेस अनेक अर्थ को बेनर पर कर युद्ध माध्यम रशिया युद्ध माध्यम तेणु ताको सजाड़ा समय आसी बर्तमान एवं जमी आम देखु इजराइल हमास युद्ध जमी जेकोसी जगह वार फ्रंट अमेरिका इनवॉल्वमेंट थिला से ग्लोब गोटे पीस स्थापना करने शांति स्थापना करने गोटे आग को बाहरी आसते प्रचार बेले से कथा कही एप्रिल भी कही शपथ नेबार 24 घंटा भितर रशिया युद्ध को से बंद करेंगे जार प्रक्रियाकरण से आरंभ कर से आदेश देते पुतिन सहित बायोलेटरल डिस्कसन करने तेणु ये सब कथा को नहीं बर्तमान ग्लोब रे अनेक देश आशावादी आशा बांधी रही संतोष प्रकाश कर किसी देश आम देखुचु भितर गोटे डर गोटे भय रही सैंक्शन कौन लगे प्रतिबंध कौन लगे कौ देश प्रति कौन कौन प्रकार आभिमुख्य तेणु विशेषकर ईरान कथा को देखा विशेषकर चाइना कथा को देखा पाकिस्तान कथा को देखा ये सब देश मान प्रति निहाती कड़ा आभिमुख्य कारण बर्तमान
जिते ट्रम्प 2.0 कथा को आम देखुचु विशेषकर अमेरिका फास्ट जो रणनीति रही से नीति आधार में वर्तमान जमी इमिग्रेशन पॉलिसी को आम देखुचु चैलेंजेस रही अमेरिका सामुद्रिक भाव में देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जहाँ कहले गोटे हूँ अमेरिकावासी डोनाल्ड ट्रम्प कौन चिंता कर राष्ट्रपति हिसाब से अमेरिकावासी अमेरिका कौन करने को जाउछंती द्वितीय अमेरिका सहित अन्य देशगुड़िकर संपर्क आगामी समय केमी रहिबो तृतीय हूँ युद्ध को नहीं जो सब गोटे द्वंद्व रहे बा गोटे प्रकार आलोचना करा जाए कि अमेरिका को जगह अच्छी वर्तमान युद्ध को नहीं ये सब गुड़िक बोधे प्रमुख दिग को नहीं आज राष्ट्रपति कहते डोनाल्ड ट्रम्प निहाती अभिव्यक्ति माध्यम वक्तव्य माध्यम से कथा युद्ध को लेकर जो मुख्य रणनीति ये युद्ध बंद होगा दरकार विश्व में उन्नति जदि हो पार ट्रेड क्षेत्र में हो बा फॉरेन पॉलिसी क्षेत्र में हो आगे युद्ध कर मनोवृत्ति बंद होगा दरकार युद्ध रू एड़ेगा दरकार ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा जो चैलेंज कथा आम कहूँ अमेरिका जमी चैलेंज वीजा कथा कहतु जमी चैलेंज इमिग्रेशन पॉलिसी कथा कहतु जमी चैलेंज फाइनेंशियल कोलैप्स कथा कहतु ये सब को नहीं से वर्तमान जो पीरियड रही आगामी 4 वर्ष गोटे गोल्डन पीरियड बा गोटे स्वर्णिम अध्याय रचना करिवे से दावा करिसेंती जो ट्रम्प समर्थक मैंने एकजुट भाव में आज जमी दिवाली माहौल माने काली पूजार माहौल अमेरिका ये समय गोटे आम देखा नुआ जुग आरंभ को ग्लोब नहीं बसला वास्तविक ट्रम्प अभिव्यक्ति पर जमी 2टी बाइबल शपथ नेले 35 शब्द विशिष्ट शपथ पर से वर्तमान अमेरिका नुआ जुग आरंभ करें 2.0 बोली वर्तमान कहूँ कारण फास्ट 4 वर्ष जहाँ थिला रणनीति जहाँ चैलेंज थिला जहाँ अमेरिकार पोजिशन थिला वर्तमान बाइडेन 4 वर्ष में अनेक किसी चेंजेस होती अनेक युद्ध भित्तिभूमि खोली अनेक जगह युद्धखोर होती अनेक राष्ट्र परिचालन होती तेणु यही 4 वर्ष में आगामी 4 वर्ष कथा को ट्रम्प कहते स्वर्णिम अध्याय सृष्टि करेंगे कारण से स्वर्णिम अध्याय सृष्टि हुए जितेबले देश में विश्व में युद्ध कौन जगह देखा न जाए शांति स्थापना हुए तेणु एक केस रे वर्तमान आम देखा रिलेशनशिप विथ इंडिया विशेषकर भारत सहित संपर्क में अनेक सुधार आसब कारण नमस्ते ट्रम्प आम देखिलु एवं हाउडी मोदी देखिलु जो प्रत्येक जगह सकारात्मक कथबार्ता केमिस्ट्री मोदी केमिस्ट्री एवं ट्रम्प केमिस्ट्री काम करथिला तेणु वर्तमान ट्रम्प जिते राष्ट्रपति हे आसुछंती तेणु अर्थनैतिक विकास जगह फॉरेन पॉलिसी जगह ट्रेड रिलेशनशिप जगह वेपनरी डेवलपमेंट जगह वेपनरी सप्लाई चेन जगह सब जगह भारत गोटे सकारात्मक भित्तिभूमि सकारात्मक गति आम आशा कर शुद्ध भाषा मुझे कथा को आसवाक चाहूली कि डोनाल्ड ट्रम्प कहले कि अमेरिकावासी चिंता करा स्वार्थ को विचार को निया सरकार तांकर नेबे एवं दरदाम कथा उल्लेख कले कि आगु को केमती दरदाम को नियंत्रण करा जाय पारिबो तांकर कैबिनेट से नहीं प्रचेषा करिवो किंतु जो अंतरराष्ट्रीय टैरिफ कथा कहा जाउथिला निज अभिभाषण मध्य से दिग को संकेत देइछंती कि या द्वारा कौन प्रभाव आगामी दिन में पड़वा को जाउछि जदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाए देखो जदि अंतर्जातीय टैरिफ कहते वक्तव्य से सूचना इंगित तेणु आगामी अर्थनैतिक विकास कथा सामना को आसूसी मूल भित्तिभूमि जदि अर्थनैतिक दिग को से आलोचना को रखिंट अमेरिकार जहाँ जहाँ डिफ्लेसन होती बर्तमान आप देखो जिते डॉलर कथा को आम देखा विचार को नेबा तेज अनेक देश सहित जो संपर्क सुधार आसी किसी देश में युद्धर भित्तिभूमि समय अमेरिका शत्रु पलटि तेणु आज जो शपथ से नौकरी अनेक देश वर्तमान हुशियार होती भयभीत होती वास्तविक ट्रम्प कौन कौन सैंक्शन लगे प्रतिबंधक आड़ में कौन कौन कड़ा नियम रखिए तेणु वर्तमान गोटे अंतर्जातीय स्तर में अमेरिका जेहेतु पृथ्वी सबुठ शक्तिशाली कंट्री एवं अमेरिका जेहेतु प्रत्येक जगार तार इनवॉल्वमेंट रही ताइवान केस देखु एपटे रशिया यूक्रेन देखु इजराइल हमास क्षेत्र में देखु एवं एपटे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया केस देखु जो भी देखु इनवॉल्वमेंट डायरेक्टली अमेरिकार रही तेणु से जगह पर्टिकुलारली से सिचुएशन पॉइंट को चेष्टा कर युद्ध जो सारा कथा आम देखु ट्रम्प शपथ नबार गोटे दिन कथा को जब आलोचना करवा तेज 19 तारिख दिन जो कथा सीज फायर कथा होता हॉस्टेजेस रिलीज कथा होता हमास एग्रीमेंट साइन करथिला एवं एपटे इजराइल साइन करथिला तेणु तांकर आसीबार पूर्वार अनुमान आम करिथिलु शांति फेरी आसीबो विश्व रे तापर ठीक शपथ नेले तांकर अभिव्यक्ति देले एबे प्रथम तांकर काम होची
पुतिन सहित आलोचना करवा जे एते लॉन्ग 3.5 वर्षर युद्ध को रशिया यूक्रेन युद्ध को संपूर्ण रूप कबरी बंद करेंगे पुतिन एवं यूक्रेन जो जेलेंस्की को यदि गोटे बेंच बसई पारती गोटे मंच रे बसई पारती तेबे ए युद्धर गोटे प्रकार समाधान हबो बोली ट्रम्प प्रवक्ति बाड़ी ओके केउ सब क्षेत्र रे भारत आगामी समय कूटनीतिक दिगरे फायदा रे रहइबो ट्रम्प आसीबा परे कोन अड़ुआ आसी पारे बोली आपण भाबुछंती भारतर कथा को जब तमें विचार को नेबा तेबे भारतर जेमति हमें कहउथिलु जो जहाज वर्तमान देखंतो हमें कहवा वेपन क्षेत्र रे जो अस्त्र शस्त्र सप्लाई कथा हमें देखिबा विशेष करी जतबेले भारत वर्तमान विश्व रे गोटे पोजीशन को आसी छि जतबेले 5th रु 3rd इकोनॉमिक स्टेप डेवलपमेंट आड़ को जाउछि एवं ए समय रे भारतर जो रणनीति भारतर जो फॉरेन पॉलिसी एथिरे अमेरिका बा ट्रम्प को विशेष करी केमिस्ट्री हमें कहउछु मैच करिवो एवं एथिरे भारत मध्य गोटे ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप हम आम तो देखी अमेरिका सहित अनेक संपर्क रही बाइडेन समय किंतु ट्रम्प समय आउटे बेटरमेंट आड़ को जीव कारण बुद्धों देश जो शांति वार्ता नहीं भारत प्रथम जाइला विश्व में यूक्रेन कथा को कहतु बा इज्राएल कथा को कहतु तेणु ताकू दोहराइवाई अमेरिका आउ थे गुरुत्व आरोप कर जगार बर्तमान अमेरिका और भारत संपर्क से सुधार आसो से वाणिज्य क्षेत्र में हो अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में हो हमें जमी कहूँ ओपन डेवलपमेंट कथा ओके श्रीत बासा आपको टिके समय अटकैवा चाहिए प्रधानमंत्री मोदी शुभेच्छार वार्ता आसी डोनाल्ड ट्रम्प को शुभेच्छा जनाई प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प को शुभेच्छा जनाई निज एक्स हैंडल पोस्ट करिसेंती पुणी थरे एकाठी काम करिया को इच्छुक बोली प्रधानमंत्री लिखिंट दुई देशर विकास पाई एक होई काम करिया पाई प्रधानमंत्री मोदी निजर प्रथम शुभेच्छा वार्ता रे कथा उल्लेख करुछंती प्रधानमंत्री मोदी प्रथम पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प नुआ राष्ट्रपति भाव में शपथ नेवा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान निज एक्स हैंडल ये शुभेच्छार वार्ता रखिंट डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प को शुभेच्छा जनाई एवं ये ऐतिहासिक समारोह से शुभेच्छा जनाई सहित आगामी समय दुई देशर विकास दुई देशर मंगल जहाँ काम करने दरकार से दिगरे काम करेंगे बोली आशा रखुछु बा इच्छुक अच्छु बोली प्रधानमंत्री मोदी तांकर प्रथम शुभेच्छा वार्ता कथा लिखुंट तो समानंद बासा एक कथा आलोचना को अनेक थर आसे कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प का संपर्क को लेकिन किंतु अनेक जगह कह जाए कि व्यक्तिगत संपर्क किंतु कूटनीतिक स्तर में से फायदा भारत को मिलिबो कि नहीं एवं आगामी समय मोदी रणनीति बा कूटनीतिक संपर्क केमती हेबाकु जाउछि अमेरिका सहित सिद्धबासा सुनि परछन आज्ञा हां तेणु वर्तमान मोदी केमिस्ट्री आम कहूँ सकारात्मक रही ना भारत गोटे विकसित भारत वर्तमान जमती डेवलपमेंट आम लास्ट 10 years बिफोर कथा को नवा 2014 को नवा 24 को नवा ये भितर गोटे आम भारत जो डेवलपमेंट देखा गोटे आकाश पाताल फरक रही जो नंबर 5 रो नंबर 3 हवाई आम आशावादी छू अति शीघ्र हवा जाऊँ ये जगार वर्तमान अमेरिकार जदि आम कह गोटे प्रकार पॉलिसी अमेरिकार गोटे प्रकार रणनीति से क्षेत्र में भारत वर्तमान किसी मात्रा लाभ यही 4 वर्ष जो स्वर्णिम अध्याय ट्रम्प रचिबा जाउछन्ती स्वर्णिम अध्याय निहाती लाभांश भारत प्रति रिलेशनशिप रे भारत सहित निहाती मजबूत रहिबो एथिरे कोन संदेह नाही ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत समरेंद्र बासा आम सहित जोड़ी आपंकर समय देथिबार एवं ए विषय अधिक आलोचना करथिबार वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समरेंद्र बासा आम सहित रहिथिले अनेक आलोचना करथिले तेबे डोनाल्ड ट्रम्प 47तम राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं सारी एवं द्वितीय टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प आगकू कौन करने जाउछन्ती आज प्रथम इनागुराल स्पीच रे मध्य ताहा शुणिबाक मिलिथिला निज अभिभाषण रे समान कथा गुड़िक दोहराइथिले जहां निर्वाचन समय डोनाल्ड ट्रम्प बारंबार कहि आसुथिले है इस कोलकाता आरजीकर डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी संजय राय को आजीवन कारादंडादेश शुणाई कोलकातार सियालदा कोर्ट आजीवन कारादंड सहित 50,000 टंकार जरिमाना देवाकू निर्देश देछन्ति एसत यह विरल विरलतम मामला नुहे बोली कहते कोर्ट पीड़िता परिवार को 17 लाख टंकार अनुकंपा राशि देवाकू कहते कोर्ट सेपटे अनुकंपा राशि ग्रहण करेंगे ना बोली कहते पीड़िता परिवार
तल कोर्ट राय विरोध में हाइकोर्ट जीवे कहले पीड़िता परिवार। गत शनिवार कोर्ट संजय मामलें दोषी सब्यस्त होते पीड़िता परिवार संजय राय को फांसी देवाक दाबी करते। 2024 अगस्ट 9 रे हत्या होता बेले 2025 जनवरी 20 तारिख में दंड विधान होछि। 5 मासरे शुणाणी शेष कर दंडादेश शुणाइले कोलकातार सियालदा कोर्ट। संजय राय दंडादेश घोषणा पूर्व केरल कोर्ट को बड़ राय आसी। प्रेमिका को हत्या मामला रे प्रेमिका को मृत्यु दंडादेश होछि। 2022 रे प्रेमिक सारण नुआ राष्ट्रपति भाव में शपथ ने अमेरिकार स्वर्णिम जुग आरंभ होता कथा निज अभिभाषण कहते डोनाल्ड ट्रंप एवं अनेक विषय उपर निज प्रथम अभिभाषण में आलोकपात कर। मो सहित मोर सहयोगी अभिषेक पुरोहित जोड़ी होती बाबद अधिक आलोचना करबा। अभिषेक, आज अमेरिकार स्वर्णिम जुग आरंभ होता कथा राष्ट्रपति भाव में शपथ ने डोनाल्ड ट्रंप कहते आउ क्यों क्यों गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक आज उठाई निजर प्रथम अभिभाषण में? ओडिशा में कहीपर कि पुणी एवं अमेरिकार ट्रंप सरकार जो भाव 47तम राष्ट्रपति भाव में से ओथ टेकिंग कर शपथ ग्रहण कर से जमती इलेक्शन आरंभ जमी से कहते कि पुणी अमेरिका को बृहत करा अमेरिका को आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो सही कथा से कहते कि अमेरिकार स्वर्णिम युग आरंभ हो जाइए और अमेरिकार विकास मोर प्रथम दायित्व रहिबो सुरक्षा को प्रथम भाव में से प्राथमिकता देवे एवं नीति अमेरिका फर्स्ट जो नीति बा अमेरिकार लोक मान प्रथम प्राधान्य दिज्व से कथा से कहते एवं सारा विश्व में पुणी अमेरिकार सम्मान बढ़ो जो भाव में अमेरिका को से आम कहीपर गोटे अमेरिकार जगह सबुठार आगुरी जमी गोटे सुपर पावर थिला से जगह को पुणी से रहिबो एवं अनुप्रवेशकारी रही पारिबे नै। एरा से बड़ कथा कहते जो भाव में आम कैनाडा कथा कहीपर एवं मेक्सिको बॉर्डर कथा कहीपर जमी अनुप्रवेशकारी संख्या बढ़ुला तो से जगह से कहते अमेरिकार अनुप्रवेशकारी रहिबे नाही। आम सामने अनेक चैलेंज रहिबो शिक्षा व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करेंगे एमती से अनेक कथा कहते 8 वर्ष धरी अनेक चैलेंज सम्मुखीन होइछि मते जीवन मारिया पई टार्गेट करा जायतिला एमिति ट्रंप कहते। तो आम जदि कहबा उदित कि जो भाव में ट्रंप एबे अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में जो शपथ ग्रहण कर विश्व में चर्चा होती यार प्रभाव पूरा विश्व में पड़ो। आम जदि कहबा शेयर मार्केट आरंभ कर समस्त मार्केट रे आम कहबा कि ट्रंप को यही शपथ ग्रहण निश्चित भाव में पड़ो। बाकी रहिबो आम देश भारत कथा कि भारत उपर कौन यार प्रभाव पड़ो जदि आम देखा ताले अनेक जिनस रही जो थे कि आम प्रथम तो कहबा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगे ट्रंप बंधुता रही जो भाव में आम आगुरी देखुचे हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप भाया इवेंट करा एबे जो निकट रे प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका जाइए गोटे कथा से कहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समस्त फुल फॉर्म जानते नरेंद्र मोदी नुआ फुल फॉर्म कहले अमेरिका इंडिया जहां कि एआई कहले। तो अनेक जिनस अपेक्षा रही राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप आभिमुख्य केमती रोचे विश्वर अन्य देश सहित संपर्क क्षेत्र में भारत सहित कूटनीतिक संपर्क आगामी दिन में कौन होगा जाऊे। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपन सूचना। The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization. है इस कोलकाता आरजीकर डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी संजय राय को आजीवन कारादंडादेश शुणाई कोलकातार सियालदा कोर्ट। आजीवन कारादंड सहित 50,000 टंकार जरिमाना देवाक निर्देश देते। एसत यह विरल विरलतम मामला नुहे बोली कहते कोर्ट। पीड़िता परिवार को 17 लाख टंकार अनुकंपा राशि देवाक कहते कोर्ट। सेपटे अनुकंपा राशि ग्रहण करेंगे ना बोली कहते पीड़िता परिवार। तल कोर्ट राय विरोध में हाइकोर्ट जीवे कहले पीड़िता परिवार। गत शनिवार कोर्ट संजय मामलें दोषी सब्यस्त होते पीड़िता परिवार संजय राय को फांसी नमस्कार असल कथा को स्वागत करुछि मु मानस। असल कथारे तीनिटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही। प्रथम प्रसंग उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा चाहिए जहाँ राजनैतिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण अटे।
गाँ बुलुछंती मंत्री यह पछर कारण कौन गोटे पर गोटे कारण आपणक निकट में रखा जाउछि। द्वितीय प्रसंग उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवाई चाहिए थिला बालांकु भी घर जो मानकर ना कटि जाइथिला घर बा आवास मिलिबारे सेमानंकु भी एथर घर मिलिबो से संपर्कित सूचना मध्य मु आपणक निकट में रखिबी। तृतीय प्रसंग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जीवन दर्शनर माने शिखाई देइचंती जने बरा दोकानी से कहानी मध्य मु आज आपणक निकट में रखिबा पई जाउछि आजिर असल कथारे। राजनीति बड़ विचित्र आउ नेता मानकर चरित्र मध्य विचित्र अटे। राजनैतिक परिस्थिति एवं राजनीतिर खेल सेमानंकु केतेबेले गाँ को पहुंचाई दिए तो केतेबेले सहर को पहुंचाई दिए। किंतु एबे राज्य रे मंत्री माने गाँ गाँ को बुलुछन एवं ए गाँ गाँ को बुलिबा पछर कारण कोन ताकु नै मध्य विश्लेषण करा जाउछि। मोर प्रथम प्रसंग उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा चाहिए जहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। गाँ बुलुछंती मंत्री तेबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आखपाखरे तो निर्वाचन नाही, आखपाखरे कोनोसी प्रकार कार्यक्रम नाही, नेता माने स्वार्थ नथिले कहा पाखकु जानती नाही। तो भारतीय जनता पार्टी नेता माने बा मंत्री माने गाँ को गाँ काहीकि बुलुचंती या पछर कारण कोन ताकु नै तर्जमा करिवार आवश्यकता रहिछि। किछि विजुअल उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा चाहिए जो विजुअल गुड़िक गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रथम विजुअल टी आपण माने देखि पारुछंती जे नेता माने किपरि गाँ को गाँ बुलुचंती। प्रथमे गोटिए परे गोटिए विजुअल मु आपणक निकट रखिबी। नेता मानकर ना कहिबी को को नेता को स्थान को जाउछंती से तथ्य मध्य मु आपणक निकट रखिबा पई जाउछि। तापरे आपणक निकट रे जीवा पछर कारण मध्य रखि देवा पई चाहिबी। प्रथम विजुअल उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा चाहिए जो विजुअल टी गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रभाती परिडा कुआडे जाइछंती से विजुअल उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करेबी। पुरी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गोटे दिन पूर्व कणास जाइथिले। आज पुरी जिल्लार विभिन्न स्थान को बुलिचंती, विभिन्न गाँ को बुलिबा पई चेष्टा करिसंती, विभिन्न कार्यक्रम रे जोग दउचंती, लोकमानक सहित कथा होउचंती, ता सहित विभिन्न कार्यक्रम सहित गाँ लोकंक पाखकु जिबा पई चेष्टा करुचंती। द्वितीय विजुअल उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा पई चाहिए जहाँ गुरुत्वपूर्ण अटे। भद्रक जाइचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गतकाली से ढेंकानाल जाइथिले, ढेंकानाल विभिन्न गाँ को जाइथिले, ता सहित आज भद्रक विभिन्न गाँ बुलिचंती, विभिन्न गोदाम बुलिचंती, लोकमानक सहित कथा हेबा पई चेष्टा करिसंती एवं विभिन्न कार्यक्रम रे जोग दैचंती। तृतीय विजुअल उपरे आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा पई चाहिए। तृतीय विजुअल टी हेउची स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंकर। से मध्य कलाहांडी जाइचंती, गाँ को गाँ बुलुचंती, लोकमानकर मन जितिबा पई चेष्टा करुचंती एवं लोकमानक पाखकु जिबा पई चेष्टा करुचंती। ता परवर्ती तथ्य उपरे मध्य आपणकर दृष्टि आकर्षण करदेवा पई चाहिए। सुरेश पुजारी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी नुआपड़ार विभिन्न गाँ बुलुथवार चित्र सामना को आसुछि। गोटे दिन पूर्व से कुचिंडा को जाइथिले एवं एही समय रे किछि गणमाध्यम प्रतिनिधि माने नेता मानकर प्रतिक्रिया नबा पई चेष्टा करथिले। नेता माने कहू कहिदेले, मंत्री माने कहू कहिदेले जे योजना गुड़िक तल स्तर रे कार्यकारी होउछि कि नाही देखिबा पई पड़िबो। आउ जने नेता जे कि रवि नायक आपण जानचंदी मंत्री से कहिदेले आमे लोकंक सरकार लोकंक पाखकु जिवु। ए कथा को नै विभिन्न प्रकार तर्जमा मध्य करा जाउछि। आपणक टीवी स्क्रीन रे 5 जन मंत्रींकर आपण विजुअल देखिले जे मंत्री माने गाँ को गाँ बुलिबार कारण कोन आपणक मन रे से प्रश्न आसुथिबो। विश्लेषण करा जाउछि एवं कहा जाउछि जे एई नेता माने एई मंत्री माने ऊपर स्तर रु ऑर्डर पाइचंती, निर्देश पाइचंती गाँ को गाँ जाओ, गाँ को गाँ गले जाई तमे निजर संगठन को सुदृढ़ रखि पारिबो। मंत्री हिसाब रे पूरा राज्यर दायित्व तुम मानकर एवं राज्यर दायित्व आपण मानकर हेतिबारो आपण माने गाँ को गाँ गले लोक माने चिंता करिवे जे राज्यर लोक माने एया चिंता करिवे जे मंत्री माने आम पई काम करूचंती। यारी मध्यरे मु आपणक निकट रे सेही कारण गुड़िक मध्य रखिदेवा चाहिए जो कारण गुड़िक विभिन्न भाव में तर्जमा करा जाउछि। कहा जाउछि
लोकंक सरकार बोली प्रमाण दबा पाई गाँ को गाँ बुलुचंती मंत्री माने। लोकंक सरकार कौन आपण जानिचंती जे मुख्यमंत्री मोहन माझी जो दिन शपथ ग्रहण कले ता परदिन कहले जे आमे लोकंक सरकार आमे लोकमानंक पई काम करिवु। 24 वर्ष परे प्रथम थर पई भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसीछि। कहा जाउछि संपूर्ण विश्वास थिले भी मनरे द्वंद्व थिला जे भारतीय जनता पार्टी राज्य रे सरकार करि पारिबो कि नाही। एही समय प्रथम थर सरकार होइतवारो नुआ भावरे विभिन्न नीति नियम आपणेबा पई पडुछि। नवीन पटनायक सरकार सहित तुलना करी एही सरकार मध्य विभिन्न भावरे आगकु जिबा पई चेष्टा करुछि, लोकप्रिय हबा पई चेष्टा करुछि। तृतीय एवं चतुर्थ प्रसंग उपरे मध्य आपणकर दृष्टि आकर्षण करेबे। आगकु पंचायत निर्वाचन रहिछि। आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे 6 मास 7 मास भीतर तो पंचायत निर्वाचन नाही, किंतु 2027 रे थिबा पंचायत निर्वाचन पई भारतीय जनता पार्टी रो प्रस्तुति आज ठारू आरंभ होई जाइछि। या पछर भी कारण रहिछि। या पछर कारण एया कहा जाउछि संगठन स्तर रे भारतीय जनता पार्टी 2024 निर्वाचन पूर्वरु एते सुदृढ़ नथिला। विभिन्न कारण एवं विभिन्न राजनैतिक कारण जोगो भारतीय जनता पार्टी सरकार करुछि। पंचायत निर्वाचन उभय शासक एवं विरोधी सम्मान प्रश्न होइथिबारो शासक दल मध्य आज ठारू काम करिबा आरंभ करुचंती। अन्य पटे एही सरकार आउ गोटिए प्रस्तुति आरंभ करिछि, ता हेउछि संगठनर प्रस्तुति। संगठन को सुदृढ़ करिया पई पड़िबो। पूर्वरु कहा जाउथिला एवं बारंबार गोटिए नैरेटिव मध्य भारतीय जनता पार्टी सृष्टि करुथिला